शाहिद मलिक साहब जो इस वक्त स्पीकर हैं, उनके बारे में थोड़ी बात बता, तो बाकी बातें मेरे को पता नहीं, क्योंकि अभी तक इनकी सारी बातें मुझे पता नहीं है। मंटू डिपार्टमेंट जो हमारी कंपनी का है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। मंटू ये करता है कि वीडियो डेवलप करते हैं, उसमें इनको सपोर्ट देने के लिए अकील साहब मौजूद है, अकील अकबर साहब, इनको अलग करते हैं। मंटू डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दोनों जगह सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हम ये करते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, पहले उसका स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर स्टोरी बोर्ड बनता है, एनिमेशन डालते हैं उसके अंदर, और फिर चीज़ तैयार हो जाती है। यही होता है, ऐसा समझ गया हूँ मैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो छोटी मोटी कंपनियाँ जो होती हैं, या वो बड़ी कंपनी जो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, वो हमारी फैसिलिटी देती हैं, दोनों पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर। बाकी बातें जो है शायद मलिक साहब आपके होंगे। थैंक यू रोशन सर। मेरा ज़रा गला बहुत खराब है, गला भी बहुत नाक भी बंद है, अगर आवाज़ सही ना निकले या गलती हो तो बताइए। मैं जानना चाहूँगा पहले कि आप क्या करते हैं। I'd like to know you first, फिर इसके बाद इंशाल्लाह सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें, पहले नाम बताएं। मैं खुश कहाँ से कर रही हूँ? चेन्नई यूनिवर्सिटी से ऑनर्स कर रही हूँ मास्टर एजुकेशन और एडवर्टाइजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट। सलमान शमीला 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 सलमान अली बीबीए स्टूडेंट कर रही इकरा इतना काम नहीं करता। Ahmed Ali, MBA from Baker University, Finance. Abdul Basit Malik, MBA student from Bahria University. सर आप भी from Bahria University. Sir, Hasib Ashraf, and I am a lead consultant at IOJ. Consultant? Lead consultant at IOJ, Institute of Journalism. आरिफ साहब नाम बताएं। मेरा नाम आरिफ है और मैं जो हूँ मंटू में हूँ, वीडियो एडिटर। अदील इकबाल और मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट मंटू। मेरा नाम मसूद अकबर है और मैं सुपर टेक्नोलॉजी के साथ काम करता हूँ। Very nice. मुझसे पहले जो स्पीकर थे लाइक वैशी साहब, माशाल्लाह काफ़ी कुछ कहे गए ब्रांडिंग के बारे में। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांडिंग? एनीवन? Like communication, the way you aware the brand itself. This is basically the main concept of the previous speaker. No, what I asked was, what do you understand of branding? And how do you describe and define branding in your own words? Branding is not just the symbol or you can say the logo. The way you communicate these things, the brand name itself, you can say. How can you describe the brand or the product which you are going to market, which you are going to advertise? Anyone else? The main thing is interaction. Brand is other thing. Brand तभी जब आपका प्रमोट होता है जब आपकी इंटरेक्शन between the customer होती है। mean the main focus from the first lecture I realized that the interaction is the main thing between the brand and the customer. And what is a brand? Brand is a uniqueness. The uniqueness. Yeah. Of what? Anything good, unique, and separate. नहीं उसके no the competitor का ना कोई भी ना हो, unique हो and yes. ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रही होती है, उससे तहत आप किससे कम्युनिकेशन होती है ना, प्रोडक्ट के जरिए आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे ना, किसी उसके लेन देन में पाए मतलब सेल में। हाँ, लेकिन आप ब्रांड तो प्रोडक्ट को वो कर रहा होगा।
अपने प्रोडक्ट को? ब्रांड तो बेसिकली आप सेल भी कर रहे होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। अगर आप फरारी है फॉर इंस्टेंस, वो एक ब्रांड है, सही है, उसके थ्रू कार्स के स्पोर्ट्स कार है, तो उसका प्रोडक्ट है वो उसके थ्रू, ब्रांड के थ्रू सेल हो रहा है। ब्रांड के नेम से बेसिकली प्रोडक्ट सेल हो जाता है, क्योंकि वो वही बात है कि आपके जो माइंड के अंदर जो बैठा होता है, ठीक है, ब्रांड, तो आप उसी के थ्रू अपनी चीज़ों को आप परचेज़ करते हो, और जो अपनी कंज्यूमर गुड्स को जो फुलफ़िल करते हैं, वो आप उसी के थ्रू अपने ब्रांड्स के थ्रू ही फुलफ़िल करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा that explains what branding is. So I request you all to pay attention to this video. आप उधर बैठो। मैं यहाँ हूँ। क्या ख्याल है? क्या समझ में आया इस वीडियो से? ब्रांड्स हैं और कंज्यूमर्स इनको ओन करते हैं, स्पेशली ये जो सोशल वेबसाइट्स हैं। ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फेसबुक अगर पॉपुलर नहीं था तो कब का खत्म हो चुका होता। अच्छा अपना ये यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने तो बना के फीचर में रख तो दिए, लेकिन कंज्यूमर्स ने उनका जो है फायदा उठाया उसकी वजह से। मेरे ख्याल से 2 मिनट्स के अंदर पूरी ब्रांड की ओरिजिनेशन के द वर्ड व्हाट डज द वर्ड मीन्स, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। पहले इट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कैटल्स, ठीक है, वो हॉट स्टैम्प्स लगती थी जो आजकल भी शायद घरों में लगती है कि जी मेरा घोड़ा यूज़ करना है उसका, ठीक है, कैटल्स के ऊपर ये लगाते थे हॉट स्टैम्प्स, ठीक है। और अब जो है ब्रांड का मतलब क्या है? अब What you make? ब्रांड का मतलब है क्वालिटी, क्वालिटी सोर्स, क्वालिटी सर्विस,
ब्रांड के पीछे लोग इसलिए भागते हैं। आप आगा खान हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? ज़्यादा पे करते हैं क्वालिटी के लिए, आपको पता है कि भाई शरारत नहीं करती, ज़्यादा चार्ज करेंगे लेकिन सही क्वालिटी सर्विस देंगे, सही मेडिकल केयर और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली आप गुलामर के कपड़े क्यों लेते हैं? फॉरेन। अब यहाँ पे जो है ना देखना ये होता है कि सबसे पहले जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के वजह से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं कि सेल्स कैसे बढ़ानी है, ये क्या करना है, इसके लिए बेसिक्स को आपको पहले अपने ज़हन में रखना है। बेसिक क्या होता है? कस्टमर। अगर कस्टमर नहीं है तो आपको ब्रांडिंग अभी तो कस्टमर्स को ज़हन में रखते हुए हर चीज़, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की इस्तेमाल और देन प्रोडक्ट की टाइम, देन यू कीप द प्रॉमिसेस दैट यू मेक। जो कस्टमर्स का प्रॉमिसेस करते हैं कि जी हम आप हमारी सर्विसेज लेंगे, उससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, तो वट एवर प्रॉमिसेस दैट यू मेक यू गॉट टू कीप। ठीक है, हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं टू डिस्कस सेवरल वेज ऑफ ब्रांडिंग, मतलब किस वेज ऑफ ब्रांडिंग बेसिकली किन किन जरियों से और किस किस तरह से आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। What Mantu specializes in is branding. मसूद साहब ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि हम वीडियोस बनाते हैं। हम क्या करते हैं? हम ब्रांड्स बनाते हैं कंपनीज के लिए। That's what I'd like to call it. We create brands. We do the branding. हम लेते हैं एक कंपनी, उसका स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसका स्टोरी बोर्ड करते हैं, उसके कॉम्पिटिशन को स्टडी करते हैं, उसके इन एंड आउट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट को, उसकी डिमांड को वो करते हैं, इवैल्यूएट and all kind of nonsense. And then we create and we come up with a story. क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी बनेगी, and then हम लोग taglines, promises इस तरह की चीज़ों से आते हैं, and then we show all that to the client. कुछ clients होते हैं wow, let's turn it into a video. The script है, story board है, इसको please turn it into a video, and then we start doing the animation. कुछ कहते हैं नहीं इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, नो ये तो हमारा मिशन कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं, इससे सेल तो हो जाएगा लेकिन वी वोंट बी एबल टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। सही। सो यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू कंसीडरेशन बिफोर वी make any promises and before you start branding the product and your site and your service. The other important thing shown in this video is that brand can not only be a product, brand can also ब्रांड एक शख्स भी हो सकता है, शख्सियत भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ इसमें मेंशन हुई, पता नहीं किसने गौर किया। पीपल, देयर वाज अ वर्ड मेंशन इन द वीडियो की आपकी नज़र में कौन कौन है ब्रांड, कौन कौन सी शख्सियत ऐसी हैं जो कि आप समझते हैं कि इज अ ब्रांड? और ये सब एंटरटेनमेंट के हैं, और इसके अलावा आगे बस एंटरटेनमेंट अब्दुल सत्तारी के साथ, अब्दुल सत्तारी, इमरान खान से ब्रांड, आसिफ जरदारी से ब्रांड। आसिफ जरदारी से भुट्टो साहब थे मेरे ख्याल से, उनको जो है उन्हें बेनज़ीर भुट्टो थी और भुट्टो साहब थे, उनको मेरा ख्याल है मेरा असर सियासत में है। इमरान खान को एज अ नॉट एज अ पॉलिटिकल फिगर बट एज एन इंडिविजुअल लेते हैं, इज अ ब्रांड। ठीक है, he can drive millions of people to his jalsa जमाना। Similarly मुस्तफ़ा कमाल साहब, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जहाँ भी जाते हैं जी अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल और लॉट ऑफ अटेंशन। दीज आर ब्रांड्स। पूरी जो पार्टी है हमारी बिलवेड एमक्यूएम, पूरी की पूरी पार्टी एक और दो इस तरह के इंडिविजुअल्स के ऊपर रिलाई कर रही है। ठीक है, सिमिलरली पूरी की पूरी जो पीटीआई है वो पूरी की पूरी एक शख्स के ऊपर चल रही है। God forbid if something bad happens with another beloved and our hero actually, उसके साथ कुछ होता है तो God knows what happened to the party. So you know this is all branding. आप branding create करते हैं किस तरह से? अपने एक्शन से, आप अपने एक्शन से, और अगर आप कोई प्रॉमिसेस करते हैं और आप उनको डिलीवर करते हैं उससे, द फर्स्ट थिंग दैट
practices में, अपने products में, अपने services में, जो भी आप देखें provide कर, whatever you want to do, you have to be honest. ठीक है, deliver करना, because reputation भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. You have to take care of your reputation as well. आपकी अच्छी repute होगी, अच्छी reputation होगी, तो people will trust you. और फिर word of mouth marketing से जगह जगह पे देखा जी इनके पास जाओ ये अच्छे जूते बनाए, इनके पास जाओ ये अच्छे चश्मे बनाए, इनके पास जाओ ये अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए. इस तरह से भी बेसिकली मैं आपको बेसिकली कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोगों की कुछ वीडियोस लेके आया हूँ. रिचर्ड ब्रांसन ये चेयरमैन है इसके वर्जिन ग्रुप के. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ रिचर्ड ब्रांसन? वर्जिन ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है. 200 कंपनीज हैं, 200 ब्रांड्स हैं, एयरलाइन से लेके पता नहीं क्या एरोनॉटिकल और पता नहीं क्या क्या कर, जिनके से इनका ताल्लुक है और हर चीज़ के अंदर. But again, I'd like to play a video. Request your attention. Really good public relations person who can get out there and get your brand name known, get your company well known. It can save you a lot of money and it'll be far more effective than sort of conventional kind of advertising. And that's something I'd really recommend. Smaller companies, or if you can't afford a public relations person, you just have to become your own public relations person. If you're going to create the best retail shop or the best clothing line or the best the best bus service or the best anything in your town, make sure people know about it, and that's an integral part of creating a business. There was an occasion where British Airways decided to sponsor a giant wheel opposite the House of the Commons in London, England, and this giant wheel was lying flat on the ground. And they got all the press together one morning where they were going to lift the wheel up, and I got a call at about 7 in the morning saying that BA had technical problems. They couldn't get the wheel up, and all the press, the world's press, were there waiting. We had an airship company, so I rang up the airship company and we scrambled an airship, and the airship went right over the wheel, and it had a massive big banner across it which simply said, BA can't get it up. And anyway, we got more coverage around the world for that than I think any other one single thing we've done. The cheapest form of marketing is not full-page adverts in the press. It's free advertising. So if you're up against a big corporation, you do need to use yourself to try to get free advertising, and try to do it in fun ways like that. So you stand out from the crowd. Try to make sure you end up doing something that hits the front page of the newspapers rather than the back page. Obviously we've gone to extreme lengths to try to put Virgin on the map. Whether it's trying to be the first to cross the Atlantic in a hot air balloon, or the Pacific in a hot air balloon, or but it did help, I think. Create the Virgin brand, make it a fun brand, and a brand that people could identify with. And what's the issues that you worry about
most about want to turn your resources toward? Well, there's a lot of issues. Global warming certainly is a massive threat to mankind, and we are putting a lot of time and energy into trying to come up with alternative fuels, and B, we just launched this prize, which is which is really a prize in case we don't get an answer to an alternative fuels, in case we don't actually manage to get the carbon emissions cut down quickly, and in case we go through the tipping point. We need to try to encourage people to come up with a way of extracting carbon out of the Earth's atmosphere, and we just, there weren't really people working on that before, so we wanted people to try to, all the best brains in the world to start thinking about that, and also to try to extract methane out of the Earth's atmosphere as well. And actually we've had about 15,000 people sort of fill in the form saying they want to give it a go, and so we only need one, so we're hopeful. Always remains the same. Together under the smarts of a man called Richard Branson, who is an incredibly compassionate human being and is coming up with really innovative ways under this umbrella of this foundation that he has to really give back. My name is Richard Branson. I just wanted to welcome you to my forum, or my blog, and hope that we can get lots of interaction with people debating entrepreneurial ideas or thoughts about business, and I will be diving in and out on a regular basis to see what you've had to say. Anyway, welcome. थैंक यू। इससे क्या हासिल हो रही है उसका? एक तो इसका एक ब्रांड है, एक वो खुद भी ब्रांड खोल करता है। इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लिखना चाहें तो इसके बारे में लिखिए। रिचर्ड ब्रांसन, इसकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है कि सफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ सिंड्रोम, आई डोंट really recall what that is, but उससे होता ये है कि he is not able to see things properly, या शायद पढ़ नहीं सकता चीज़ों को। जी पता नहीं, कुछ है मेडिकल कोई टर्मिनोलॉजी आती नहीं सही, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता सर से। बचपन से तो उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि फायर आ गई। उसके बाद ये अब जो है 2008 में इसका रेवेन्यू आपने देखा 11 बिलियन पाउंड्स, 11 बिलियन इसकी कंपनी का रेवेन्यू। अच्छा, इसने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं अपनी इसमें, और एक सेलिब्रिटी ने भी उसके बारे में वही की बात कि ये बड़ा इनोवेटिव है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ी इसकी पर्सनालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे जो ज़बरदस्त बात लगी वो ये कि हम फ्री एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान दें, फन बेस करें, इस तरह की चीज़ें करें, ठीक है, कि वो आपको फ्रंट पेज पे तो ऑटोमेटिकली लेके आए, ठीक है, बट बी केयरफुल, क्योंकि वो आपकी रेपुटेशन को जेपरडाइज भी कर सकते हैं, तो कुछ भी करने से पहले मतलब अच्छी तरह से प्लानिंग होनी चाहिए कि करना है, ठीक है। आप कुछ भी करें ऐसे बिना प्लानिंग के और कहें कि चीज़ का आउटकम ये हो जाएगा तो गलत। पहले प्लान करें, पहले मशवरा करें और फिर गो फॉर फ्री एडवर्टाइजमेंट, इवन दो दे हैव नो लैक ऑफ मनी, तो
बहुत पैसा होगा इनके पास, बट स्टिल देखें वो क्या कह रहा है उसका। दूसरी चीज़ है इनोवेटिव, तीसरी चीज़ है मेक अ डिफरेंस। अपना जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड है, आपकी जो सर्विस है, वो किस तरह से डिफरेंट है दूसरे लोगों से, कंपटीशन से। हाईलाइट का हाईलाइट का बी इनोवेटिव। बिरयानी 36 लोग बनाते हैं, बट नाम किसका चलता है? उसकी ऐसी गुडविल है हर जगह जगह जगह। रेडी से उसने शुरू किया था, काम हो गया, ठीक है। और भी लोग हैं बिरयानी, कराची फूड, ये वो सब चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेल इसकी होती है। इनोवेटिव हो आप डिफरेंस क्रिएट करें, और आप एडवर्टाइजमेंट्स के ज़राए फ्री के और इस तरह मतलब फन एक्टिविटीज। लाइक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि फन होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। उन्होंने भी एक बात कही कि इंडियन जो एडवर्टाइजमेंट जो मीडिया है, इंडियन मीडिया जो है वो ड्रिफ्ट कर जाता है कभी कभी अपने सब्जेक्ट से। बट आई फाइंड दैम वेरी हिलेरियस, मोस्ट ऑफ देयर एड्स दैट दे मेक वेरी हिलेरियस, बड़ा हंसी आता है। एग्जैक्टली, दैट्स क्रिएटिव। इससे क्या होता है कि पीपल लाइक वाचिंग दोस काइंड ऑफ एड्स, और मुसलसल देखेंगे, फिर एक क्रिएटिविटी दिखी, फिर दूसरी क्रिएटिविटी, दे बिकम अ फैन। वी आर ब्रांडिंग आवर सर्विसेज, ठीक है। एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है, आपसे एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है, लेकिन हम कोई फनी चीज़ नहीं कर रहे हैं। सैडली मेरे को भी कोई चीज़ें नहीं आती, तो जो मारना नहीं आता, तो सही टाइम पे कोई हरकत करना नहीं आती, जिसकी वजह से मैं एहसास होता लिटिल एक्सपीरियंस, पर थोड़ी थोड़ी बातें करने के बाद उससे कुछ आ जाएंगी करने होंगे। बट सी द रीज़न फॉर पुटिंग अप दिस लिटिल स्टैंड हियर वाज टू ब्रांड आवरसेल्व्स, ठीक है। तो टेक द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी मिले आपको, ग्रैब इट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आपको पता होना चाहिए, आप ये नहीं कि हर चीज़ में आप स्पैमिंग करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया के ऊपर जाने, देयर आर 5 मिलियन यूजर्स ऑन फेसबुक, 500 मिलियन, 5 मिलियन से पाकिस्तान में थे पिछले साल, 6.5 मिलियन हुए फेसबुक में। तो आप उनको एथिकली अप्रोच करें, ठीक है, और उनको अपना प्रपोजल दे, अपना पिक्स दे, अपना प्रोडक्ट दे, गेट अ वीडियो मेड फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर सर्विस, एंड ब्रांड योर सर्विस, नॉट जस्ट बाय टेक्सटिंग, नॉट जस्ट बाय दी ओल्ड फैशन लंबी लंबी किताबें, लंबी लंबी वो सारे के सारे आपने लिखकर पढ़त कर दी। आई नेवर रीड स्टफ, आई प्रेफर वॉचिंग वीडियोस। व्हाट डू यू थिंक? ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है। एग्जैक्टली, आप वीडियोस को देखते हैं और उस पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप देखते हैं पूरी देर कि ये हो क्या रहा है, स्पेशली अगर दूर रहता चल रहा है, तो नाक हम बंद ना चल रही हो, ऑब्वियसली सामने उनके बिक रहे हैं, टाई बिक रही है और पीछे नाक चल रही हो, तो कैसा चलेगा? इट हैज़ टू बी कूल, इट हैज़ टू बी रियली कूल, व्हाटएवर यू डू रियली कूल एंड फन, ठीक है, ताकि फिर कस्टमर्स जो है ना चेक के साथ, ठीक है। लेट्स टाइम फॉर अनदर वीडियो। सॉरी, बहुत सारी वीडियोस हो रही है, बट हम क्या करें, मजबूर हैं, हम लोगों का काम ही वीडियोस में। स्टीव जॉब्स को तो सब जानते होंगे, इनकी बातें भी, इनके लेसन भी जबरदस्त सुबह करना। Money is about value. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. But even a great brand needs investment in caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speed and beef. It's not to talk about what's the negative. It's not to talk about why we're better than women. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the
sales are going like this. And then they try to got milk and the sales are going like this. Got milk isn't even talking about the product, that's what the focus is on the absence of product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing is the universe has ever seen in thing. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet when you think of Nike, you feel something different than the shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the product. They don't ever tell you about the air soles and why they get the Reebok air soles. What does Nike do in everything? They honor great athletes and they honor great athletes. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on that. You never know. You never know. So, when I got here, Apple just fired me in a competition of 23 agencies that 4 years from now would pick one. Sorry, काट दिया. वीडियोस ये वाली वीडियो भी आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे. इसकी पूरी स्पीच है, इसकी ये लोग जो है ना ये ऐसे ही नहीं हो गए ग्रेट. लोग आज तक इनको जानते हैं, इज्जत करते हैं. इनकी वजह से ब्रांड्स चल गए थे, इनकी वजह से इनका आईपैड, आईफोन और ये चीज़ें चली. सबसे पहले आईपॉड हुआ हिट, उसके बाद आईफोन आ गया, आईफोन आया, फिर आईपैड आ गया, राइट. उसके मरने के बाद सेल्स देखना कितनी चली. इसके स्टैटिस्टिक्स में कल देख रहा था, एक महीने के अंदर कोई 1 मिलियन यूनिट्स सेल हुए आईपैड 2 के. जब वो लॉन्च हुआ था उसके 30 डेज के अंदर 1 मिलियन यूनिट्स और सेल्स. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि नाइकी एक ब्रांड है, ठीक है. नाइकी ने कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर अपने जूतों को प्रमोट नहीं किया, अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले. उसने हमेशा एथलीट्स को ऑनर किया और ब्रांड को अपने एथलीट्स के साथ लिंक कर दिया, एसोसिएट कर दिया, ठीक है. एथलीट्स को ऑनर करना, लाइक दैट. दिस इज अनदर वे, अनदर टैक्टिक. आप क्या किसी अपने ब्रांड को, अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को किसी ह्यूज कंपनी, ग्लोबल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लें, एसोसिएट कर लें किसी के साथ, किसी सेलिब्रिटी के साथ. किसी सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने हुए, वो टैग भी वो पता नहीं कौन सा ब्रांड है, उनके ब्रांड एम्बेसडर है. इसी तरह शाहिद कपूर साहब क्लियर के ब्रांड एम्बेसडर हैं. हम सफर वाले जो है वो भी क्लियर, फवाद साहब, फवाद जो है वो भी क्लियर के एम्बेसडर बने हैं. वसीम साहब, वसीम अकरम साहब हैं, बिग फैन ऑफ वसीम साहब. वो जो हैं यूफो के, मैं सोच रहा हूँ दोबारा अपना कनेक्शन यूफो पे स्विच करूँ. तो इस तरह से होता है, ये इम्पैक्ट होता है. आपको इम्पैक्ट डालना है अपने जो ब्रांड के पास. दिस इज ब्रांडिंग, बेसिक स्टफ. दिस इज ब्रांडिंग. सेलिब्रिटी को पकड़े, उसको अपना एम्बेसडर बनाना. कम अप विद न्यू आइडियाज, बी इनोवेटिव. वही अगर आप ओल्ड फैशन, ओल्ड टेक्निक्स जो फॉलोअर बनेंगे आप, फिर यू विल नेवर बी एबल टू डू समथिंग. यू विल बी एबल टू अचीव success. You can be successful to a certain extent, but you will never hit it big. To hit it big, you have to be very, very creative. You have to think out of the box. कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने कभी नहीं किया. ठीक है? Time for another video. A brand is what prevents something from being a commodity. It's what's special and unique about something. It's why I pay more for a cup of coffee at Starbucks than the coffee down the street. Coffee down the street may be better, maybe swill, I don't know. But the Starbucks brand assures me I'll get a good, strong, although slightly over-roasted to my taste, cup of coffee. The Burger King brand is why my cheeseburger fanatic friend Bob eats at Burger King's when he travels. When he's at home, he rarely goes to Burger King, but on the road he does because he knows exactly what he's going to get at every Burger King. Burgers might not be his favorite, but he's happy with them. Whereas if he goes to the diner down the street, he may or may not like the burger.
He doesn't know and rarely takes the chance. There's trust and safety in brands. Personal branding is branding applied to you. It's what's special and unique about you. It's why you're not a commodity. Your personal brand is quite simply who you are. ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, बाद में सुनाएंगे। इसमें इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ट्रस्ट होता है, क्वालिटी होती है। हमने पहले भी कहा था कि क्वालिटी, ब्रांड इज क्वालिटी। अब यहाँ पे भी ट्रस्ट है। इन्होंने एक जो बात की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट। यू ट्रस्ट आवर more than other hospitals. You trust their quality more than other hospitals. Similarly, you trust Nestle mineral water more than other water bottle companies, right? You go for Nestle. ठीक है? इसी तरह आप कोई किसी ब्रांड को ढूंढ रहे होते हैं, when you're buying a chewing gum, you go for a brand. What chewing gum do you like? Chewing gum. There's never be a What chewing gum do you like? Fresh. Another good feeling. And what chewing gum do you like? Fresh. You see? Brands जो हैं, ये होते हैं। अब आप जाते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो सबसे पहली वीडियो प्ले हुई थी, उसमें एक ज़बरदस्त बात थी कि अगर आप अपने ब्रांड्स को एज अ वर्क यूज करना शुरू कर दें, मतलब आप नहीं, आपके कंज्यूमर्स आपके ब्रांड को एज अ वर्क यूज करना शुरू कर दें, Google it, Skype it, Photoshop that. That is your success. That is when you know कि आपका ब्रांड स्टार्ट है। आपका फोकस जो वो होना चाहिए डे वन से। मैंने अपने ब्रांड को ऐसा बनाना है, मंटू से बनवा है, वीडियो बनानी मंटू से करो, पिक्चरें खिंचवानी है मंटू से खिंचवाओ, इवेंट्स है मंटू से करवाओ, एडिटिंग है मंटू से करवाओ, एनिमेशन है मंटू से करवाओ। That should be your goal. हमारी कंपनी लाइक साहब कह के गए थे कुछ, एंड इट इज सैड दैट नॉट मेनी पीपल सिटिंग हियर नो अबाउट अस। हम लोग यू नो प्रीटी एक्टिव है, यू नो इस तरह की मीडिया जो गैदरिंग्स होती हैं छोटी छोटी, और जाके एक मकसद क्या है, ब्रांडिंग। आजकल हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल है बाहर साहब को मैंने देखा था लेके खड़े थे, रेहाज स्कूल के लिए फोटो खींच रहे थे। पता नहीं आपने से कितना ने किया, आपने सबने कर यहाँ स्कूल के साथ नहीं किया, हम करेंगे। एक आपने किया, एक आपने किया, आपने तो अभी हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बैनर लेके खड़े हो, हम आपकी फ़ोटो भेजेंगे, उसको फेसबुक करेंगे। द इंटेंशन बिहाइंड दिस होल आइडिया इज टू ब्रांड अस। अभी आप देखिएगा, यहाँ स्कूल के पेज पे जाइएगा एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। योर ब्रांडिंग, यहाँ स्कूल इज अ फ्री एजुकेशन सिस्टम। नहीं मुतारिफ कराया, देखा कि यहाँ पे लोग जो हैं हमारे ड्राइवर हजरात, कुक हजरात, माली हजरात, इस तरह के जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके पास एजुकेशन के पास वो नहीं है, या दे वर नॉट प्रिविलेज्ड टू गो टू स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और उनके लिए ये एक आइडिया कि मोबाइल पे जब उनके पास ऑलरेडी कॉन्टेंट है, that they're spreading like wildfire, lovely चीज़ें, music videos, funny stuff, accidents and these kind of things. Why not educational stuff? आप class 1, class 2, class 10 का curriculum डाल दें, videos के ऊपर, memory cards के ऊपर शेयर करें। That's the whole idea. और उसमें हम क्या चाह रहे हैं, हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं कि यूथ की फोटोज लेंगे, इनको एम्बेसडर बनाएंगे और इसकी वजह से हमारी वैल्यू होगी। और What do you think about this? Nice है। ऐसी कह रहे हैं आप, वाकई नाइस है। Why just youth? Why just youth? Why just youth? Well, sorry, शायद मेरे से गलती होगी, बट हम जो भी हमें मिलता है, चाहे वो लाला हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, भी हम लोग एक्सपो सेंटर गए थे, वहाँ भी हमने मकसद ये था ब्रांडिंग, अवेयरनेस। इट्स अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस, टेलिंग पीपल व्हाट यू डू, व्हाट यू आर अबाउट, ठीक है, इट्स योर आइडेंटिटी। तो हम लोग एक्सपो गए, वहाँ जाके हमारा मकसद था कि इंटरनेशनल लोगों से मिले, काफ़ी जानिए, उनको बताएं, उनको डांस के बारे में बताएं, उनको
फूड के बारे में बताएंगे और जो जो चीज़ें बता सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं। That was the intention of that. I think we managed to do that. We went back, we made a good impression on them. I'm certain that they'll go back, and then whenever they get to their computer, they'll log on to our websites to see the content. और उसके बाद hopefully अगर quality अच्छी है तो they'll inshallah get back to us and tell us कि भाई हमारी क्या ठीक है। Branding करो because you guys know अपने लिए अपनी ऐसी रेपुटेशन बनाए मार्केट के अंदर so that people go after you and that you become desirable. It's like Aga Khan, it's like Fresher, it's like Big it's like Pampers. When you go to a medical store, you don't ask for a diaper. You tell them that you want Pampers. Pampers is the name of the brand, not the product. Pampers is the name of the product. उसको ऐसा प्रमोट किया हुआ है कि बस अभी भी लोग जाते हैं आप कहते हैं क्लियर तो बाकायदा पेप्सी कह रहे हैं आई नीड पेप्सी नथिंग एल्स दैट्स ब्रांडिंग। और फाइनल वीडियो है ये देखिए एक बच्चा है लेमनेड सेल कर रहा है ठीक है उसने दुकान लगाई है छोटी सी लेमनेड बेच रहा है इन पानी ऐसे तो वो एक अंकल आए यहाँ पे उसको समझा रहे कि ये क्या कर रहे हो ऐसे थोड़ी दिखेगा।